Welcome everyone in lecture number 14. In this video, we will discuss some problems on regression, how to find regression lines, right? So see the video carefully, and if you like the video, please share it, subscribe my channel for more videos on this topic. Thank you very much. So problem number 1 is obtain the equation of two lines of regression for the following data. Also obtain the estimate of x for y is equal to 70. We are given the values of x and the values of y, and we have to find two lines of regression, the equation of two lines of regression. So first we will find the correlation coefficient by shortcut method. Correlation coefficient निकालने के लिए we first find u, which is the deviations of the values of x from 68, and v is deviations of the values of y from 69, and then we find u square v square and product of u and v. This is we are changing the scales of these values because we know that the correlation coefficient is independent of change of scale. So by changing the scale, the values become quite smaller. So now we find the correlation coefficient between u and v. Okay, so you can see that I have tabulated here the values of u and the values of v, and the values of u square, v square, and the product of u and v, right? Now we know that average value of u is u bar, which is equal to 1 upon n summation u. So this comes out to be 0. If you see here, if you add all the u's, so sum will become 0. Okay, 3 plus 2, 5, 3 minus 3 minus 2 minus 5 minus 6 minus 7, and 4 plus 2 plus 1 is also 7. So plus 7 minus 7 will cancel each other. So we have sum equal to 0. And similarly, v cap, that is average value of v, is also 0. Covariance of u and v is expected value of uv minus expected value of u into expected value of v. Expected value of uv means average value of products of u and v. This is 0. If you find the sum of products of u and v, it is 24. So it is 1 upon 8 into 24. So it is 3. Now we find variance of u, sigma u square is 1 upon n summation u square minus u bar whole square. It comes from the formula expected value of u square minus expected value of u whole square. U bar is 0 and u square is sum is 36. So it is 4.5. Similarly, sigma v square is 1 upon n summation v square minus v bar whole square. So it is 1 upon 8 into 44. V bar is 0 and summation v square means sum of all the v square values. It is 44. So it is 5.5. So correlation between u and v is covariance between u and v divided by sigma u into sigma v. So it is 3 over square root of 4.5 into 5.5, because here we have sigma u square, so we have to take the square root of these two values. So it is equal to 0.603.
Since correlation coefficient is independent of change of scale and origin, so it is equal to Rxy. Okay. So once we have the value of Rxy, now we will find the equation of regression lines by using the formula that I have told you in the last class. That x minus x bar is equal to R sigma x over sigma y into y minus y bar. And equation of regression line of y on x is y minus y bar is equal to R sigma y over sigma x into x minus x bar. ये दोनों equations होती हैं हमारे पास. तो let's write that equations. Regression line of y on x. ये क्या होती है? y minus y bar R sigma y over sigma x into x minus x bar. ठीक है. So we need here sigma y, sigma x, the average value of x, average value of y. R is already calculated. So we calculate first of all average value of x. Okay. तो average value of x हम कैसे find करेंगे? हमारे पास u क्या है? u हमने कैसे निकाला है? x माइनस 68 करके. देखिए x माइनस 68 है. तो u बार का मतलब समेशन u इज इक्वल टू समेशन x माइनस समेशन 68. अब 1/n से डिवाइड कर दीजिए इसको. ठीक है. तो ये तो u बार हो गया. ये हो गया x बार. ये 68 n टाइम्स ऐड होगा. ये n से n कैंसिल हो जाएगा. 68 ही रहेगा ये. तो x बार की वैल्यू क्या आएगी? u बार प्लस 68. u बार 0 है प्लस 68. तो ये 68 आ गई. यानी कि मीन आ गया 68. इसी तरह से v इज y माइनस 69. y माइनस 69 था. ठीक है. सो समेशन v इज समेशन y माइनस समेशन 69. 1/n summation v is equal to 1/n summation y minus 1/n summation 69. v bar minus is equal to y bar minus 69. So y bar is v bar plus 69. v bar is 0. So we have y bar is equal to 69. Now we find sigma x. Sigma x ओके. सिग्मा एक्स हम फाइंड करेंगे. सिग्मा वेरिएंस जो होती है वो कोरिलेशन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होती है. तो जो सिग्मा यू होगा वही सिग्मा एक्स भी होगा. अंडर रूट 4.5 2.12. इसी तरह से सिग्मा वाई इज सिग्मा वी अंडर रूट 5.5 2.35. ओके. क्योंकि यहाँ पे डेविएशंस मीन वैल्यू से लिए गए हैं इसलिए ये
दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी when the deviations are taken from mean, क्योंकि यू कैन सी दैट जो हमने यू एक्स का डेविएशन 68 से लिया था वो एक्स क्या एक्स जो 68 है वो नथिंग बट वो मीन है एक्स का, और इसी तरह से 69 भी मीन है वाई का। जब तो डेविएशंस फ्रॉम मीन वैल्यूज लेते हैं तो जो एक्स वेरिएंसेस हैं एक्स की वो वेरिएंस ऑफ यू के बराबर होगी, ठीक है। इसी तरह वेरिएंस ऑफ वाई वेरिएंस ऑफ वी के बराबर होगी। तो नाउ वी आर रेडी टू राइट द इक्वेशन, regression equation of y on x is given by y minus y cap r sigma y sigma x x minus x bar. So y minus 69, r is 0.6, sigma y is 2.35 divided by 2.12 into x minus 68. When we solve this, we will get y is equal to 0.665x plus 23.78. This is the regression line of y on x. Now we find regression line of x on y, x minus x bar r sigma x over sigma y, y minus y bar. This implies x minus 68, 0.6, 2.12 over 2.35, y minus 69, x is equal to 0.54. After solving we get this equation. क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था, इफ यू सी, कि एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू 70, यानी वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे एक्स को एस्टिमेट करने के लिए? हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। सो टू ऑब्टेन estimate of x for given value of y, we use regression equation of x on y. So regression equation of x on y is 0.54 y plus 30.74. So estimated value of x is 0.54 into 70 plus 30.74. That comes out to be 68.54. So you can see y is equal to 70 के लिए x की estimated value हमारे पास नहीं है। x की कोई भी वैल्यू हमारे पास y is equal to 70 के लिए नहीं है, लेकिन हमने उसको estimate कर लिया है by using the regression line of x on y से।
Okay, so this denotes the estimated value of x. Next problem is problem number 2. In partially destroyed laboratory, record of an analysis of correlation data record of an analysis of correlation data gives the following results. Variance of x 9. Regression equations. We are given regression equations. It is not given that which is regression equation of x on y and which is y on x. We are just given these two equations. This and 40x minus 18y 214. What are mean values of x and y? Mean values of x and y, that is average value. Correlation coefficient between x and y. Correlation coefficient between x and y and standard deviation of y. Standard deviation of y, that is sigma y. Okay, so we find the solution of this problem. हमें ये पता है कि दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई से पास होती है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई होता है. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई तो फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5. सो वी हैव 40x minus 50y plus 330, and the second equation is this. We can take this 214 to the left hand side so that we have minus 214 here. So subtracting these two, we get here we have minus 32, and here we have plus 116, so that y is equal to 116 divided by 32. That will give
I think there is some mistake here. These two will be added here. This is a mistake here. So we add these two. So that we have here 4, 4, 5. Okay. So y is 544 divided by 32. So the answer is 17. So average value of y is 17. Now to find average value of x, similarly x bar is 13. ये y bar है. So you can write since point of intersection of two lines of regression is the average value of x and y. So x bar is 13 and y bar is 17. Okay. Now we find correlation coefficient between x and y. So to find correlation coefficient, we find the regression coefficients first of all. So we are given regression line as 8x minus 10y plus 66 is equal to 0. And the second equation is 40x minus 18y is equal to 214. So we can write this equation as y is equal to 8 upon 10 x plus 66 upon 10. Okay. And this equation can be written as x is equal to 18 upon 40 y plus 214 divided by 40. ओके, ऐसे लिख लिया. अब ये इक्वेशन जब आपने इसको इस फॉर्म में लिखा है y इज इक्वल टू की फॉर्म में, तो ये हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x देगी. बी वाई एक्स हमें क्या मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x which is 8/10. देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन अगर y ऑन x हम लिख रहे हैं तो ये पार्ट जो होता है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है. और ये किसका कोफिशिएंट है? ये x का कोफिशिएंट है. तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा y इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखने पर वो b/x होगा. इसी तरह से bxy क्या होगा? ये होगा 18/40 y का कोफिशिएंट, तो 9/20. हम जानते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है. प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था इसको. ये कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. So we just multiply these two.
so that we have here 9 by 25. ओके, तो अब आप इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे या नेगेटिव? इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी पॉजिटिव हैं, इसलिए आर भी पॉजिटिव आएगा। सॉरी, आर हम लेंगे प्लस माइनस 3/5। हाँ, हम इसको पॉजिटिव लेंगे, r इज इक्वल टू प्लस 3/5 क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। बिकॉज byx and bxy both are positive. थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, दैट इज सिग्मा y। तो सिग्मा y के लिए हम byx का यूज करेंगे c पार्ट के लिए। दिस इज b पार्ट। byx इज r सिग्मा y ओवर सिग्मा x, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। तो byx हमें पता है 4/5 है। r भी हमने फाइंड किया 3/5। सिग्मा y हमें पता नहीं है, और सिग्मा x हमें गिवन है। सिग्मा x आपको गिवन है, इट इज 3। ओके, we put here 3. sigma y is 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, sigma y is 4. So we have solved all the parts. Let me revise. In this question, we are given two regression lines and we are given variance of x. We have to find mean values of x and y. So we solve these two regression lines and find the values of x and y. That will be equal to average value of x and y. Then to find the correlation coefficient, we use the regression coefficients. Regression coefficients निकालने के लिए we write first equation in the form of y is equal to mx plus c, and in second equation in the form x is equal to my plus c, so that we have regression coefficients with us. Okay, you may be thinking that why not we have written this equation as y is equal to mx plus c and this equation as x is equal to my plus c. So if you do that, then you will have y is equal to 14 by 18, 40 by 18 as regression coefficient b by x, 40 by 18, and here we have 10 by 8, both are greater than 1, which is not possible, because we know that if one regression coefficient is greater than 1, then other would be less than 1. So in this case, if we write these two as this, so we'll get regression coefficient less than 1 here and it is less than 1 here. But if you reverse, अगर आप इस equation को y is equal to mx plus c की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको m की वैल्यू 40 by 18 मिलेगी। मतलब जो कोफिशिएंट मिलेगा x का वो 40/18 मिलेगा, जो 1 से बड़ा है। और यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको मिलेगा 10/8, जो कि 1 से बड़ा है। दोनों केस में 1 से बड़े मिलेंगे, इसलिए हम इन्हें ऐसे ही लिखेंगे। तो हमें ये रफ में करके देखना पड़ेगा कि हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखें और इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखें। तो थोड़ा सा आपको रफ वर्क करना पड़ेगा इसको पता करने के लिए। तो
यहाँ से हमें बी बाई एक्स मिला विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड इस इक्वेशन से हमें बी एक्स वाई मिला जिस द कोफिशिएंट ऑफ वाई. Then we use the property that correlation coefficient is the geometric mean between regression coefficients. So we multiply these two and get the value of r square. Then we take the square root. There will be two sign here. Which sign is to be taken depends upon the sign of b by x and bxy. If both are negative, then r will be taken as negative. If both are positive, then r will be taken as positive. So here both are positive, so we'll take r positive. Then to find the standard deviation of y, we use this equation. We use this formula. B by x is r sigma y over sigma x. We have the value of b by x. We have the value of r sigma x. We find the value of sigma y. Okay. Next equation problem is can y is equal to 5 plus 2.8x and x is equal to 3 minus 0.5y be the estimated regression equations of y on x and x on y respectively. Explain your answer. क्या हम इस इक्वेशन को y on x और इस इक्वेशन को x on y ले सकते हैं? ले सकते हैं तो क्यों ले सकते हैं, और नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते? आपको इसका रीजन बताना है. तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था. सबसे पहले आप रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करिए. तो अगर हम इसको रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x मान के चलते हैं तो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट मिलेगा p बाई x. b बाई x क्या मिलेगा? 2.8 कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम x is equal to 3 minus 0.5y से हमें bxy मिलेगा जो कि -0.5 के बराबर होगा. ये आपको याद रखना है कि y इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखना है. अगर x y के लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, मतलब y के साथ होगा, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर. y इज इक्वल टू की फॉर्म में आपको लिखकर फिर x का कोफिशिएंट देखना है. इसी तरह x इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखकर फिर y का कोफिशिएंट देखना है. अब ये देखिए यहाँ पर आई एम सॉरी, इट शुड बी -0.5 ओनली. यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है एक और एक नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का साइन कोवेरिएंस पे डिपेंड करता है. राइट तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक वैल्यू कोवेरिएंस की पॉजिटिव हो, एक वैल्यू नेगेटिव हो फॉर द सेम डेटा कोवेरिएंस. राइट तो इसलिए ये वैल्यूज दोनों की पॉसिबल नहीं है. अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर कोवेरिएंस नेगेटिव है तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी. तो इसलिए this and this cannot be the estimated regression equations of y on x and x on y by the simple reason which is not possible. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है. ओके क्योंकि आपको पता है बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, एक बार फिर से बता रही हूं मैं, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर.
बी एक्स वाई की वैल्यू होती है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। सो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। कोवेरियंस के ऊपर ही डिपेंड करती है इन दोनों के साइन। ठीक है, तो कोवेरियंस तो अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। इसलिए हमारा ये अजम्पशन कि ये y ऑन x होगी और ये x ऑन y होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इज नॉट पॉसिबल। ओके, थैंक यू वेरी मच।